Okay, all right. Bismillah Rahman Rahim. Thank you very much for joining us today. This is yet another topic specially designed and aimed for the Pakistani pharmacist. And definitely it's high time to engage in direct patient care activity. And we'll talk about this in detail on some of the key concepts and strategies that how we actually can get engaged into direct patient care activities. So why I have chosen this topic really because there are certain concerns when I see the scenarios within Pakistan, what's happening in the community pharmacy and hospital pharmacy setups. We all know and we all acknowledge that pharmacists are an active members of healthcare team. And definitely there are a few pillars on which the healthcare system is standing, the doctors, the nurses, the pharmacist and the allied healthcare professionals. So if any one pillar is not strengthened and is not having a sound foundation, obviously the healthcare system burden will be, on rest of the staff, and definitely there is a high chance that the system fall apart. So it's really important that each pillar stands tall and firm with all the professional standards in place and providing their services to the optimum level. तो pharmacist भी important है, pharmacist ने भी इसी तरह से अपना role play करना है. दूसरी important बात ये है कि you've seen different literature that when we talk about pharmacist managed or pharmacist led medication management services, efforts या कोई इस तरह के programs जैसे immunization है, जैसे anticoagulation है, जैसे clinical pharmacy है, जो कि pharmacist led है, तो there are proven cost, patient care and safety benefits out of it. Length of stay कम हो जाता है, adverse reactions कम होते हैं, ADEs पे effect आता है, burden of disease में जो है वो अब role important play कर सकते हैं, rational use of medications में role play कर सकते हैं. So these are the proven things and advantages as reported in the literature. So pharmacist involvement is really necessary. It's not just a wish, but it is a necessity which has been evident by various supporting literature and evidence across the globe. Number three is that the profession is no more limited to the basic role. Many people still think that our basic role is procurement, inventory management, compounding, and dispensing. Yes, this is our core function, and this will remain our core function. Either it is done by pharmacists or maybe by the robots in future. It will remain the part of pharmacy profession, but this is not just the profession. There are a lot more entities and a lot more things that are being included, and the profession is now more patient-centered. So we cannot work on in a silo that where we don't have direct interaction with the patient. So that is not a requirement and the scenario anymore. You have to be more in the picture now. You are more into the direct integration with the healthcare providers as well as direct interaction with the patients. And then the Pakistani healthcare scenarios is facing many big challenges, and we as a pharmacist should know about those challenges. Right now, you all know that Pakistan is going through an economic crisis, and we are seeing a lot of issues with the disrupted supply chain, drug shortages, product shortages. So this is currently a huge issue right now. So what pharmacists are doing, how they can play their roles, continuity of care, patients की एक seamless care कि उनको uninterrupted medications मिलती रहें, therapeutic alternate suggest हो जाएं, alternate suggest हो जाएं, brand switching हो जाए, options जो है वो discuss कर लिए जाएं, supply chain को कैसे बेहतर बनाया जाए. And then there are other challenges like antibiotic misuse, irrational use that is leading towards growing antimicrobial resistance pattern. And then there are burdens of adverse drug reactions and adverse drug events in the healthcare sector of Pakistan. So how medication safety concepts are coming into play. So it's not like a healthcare system in Pakistan is totally challenges free. And we don't, if we, sit dormant, definitely these challenges will grow, and we have to, stand up, we have to play our part, and we have to play our part now. So with this preamble, as I have discussed, that many of us do think that pharmacists have this, the fundamental role of selection, procurement, storage, distribution, handling of prescriptions,
preparation, compounding, and dispensing to the patient. And I do agree that this is our core role will remain our core role. But there are other important things that are being missed out from the whole picture. And what are those? What about appropriateness review? Prescriptions are known to be the top area of medication use cycle where most of the medication errors occur. So there could be duplications, there could be interactions, there could be, irrational combinations, there could be omissions, there could be many things that can happen within a prescription. So if the prescriptions are not reviewed properly, obviously those prescription errors will pass on, and patient may experience serious harm out of those. So appropriateness review is a kind of an indirect activity that you perform either in front of the patient or away from the patient while reviewing the physician order. And you are adding value so that the patients are saved from any errors that are happening. So most of the times in Pakistani scenario, if we talk about, we are just handling the prescriptions just like orders of any other commodity, these are not medications. So we have to deal them as medications, and we have to do the safety check while we are dispensing and talk to doctor and discuss the improved strategy if there are any issues observed. So many of us also think that once the medication is delivered to the patient, the job is done, but that's not the case. The job is still continued. So the point is, when patients are in picture, so what about the transition of care? Patients are coming from their homes to the healthcare facility. Within healthcare facility, they are moving from one location to another, from one acuity level to another acuity level, maybe from ICU to wards. And then they are transitioning between outpatient service to emergency services to inpatient services. And then they are transferred out or they are discharged. So every transition of care, there is a chance of error that may occur within their prescriptions, some kind of duplications, omissions, or any kind of mistakes. So worldwide, it is known that transition of care, there has to be a review of the medication therapy so that these kind of issues can be addressed. So if we are not engaged at that level, so we are not providing direct patient care. So that comes hands in hand with reconciliation. You have to tally, you have to reconcile what exactly the medications are at each level of transition. Ghar pe kya thi, hospital mein kya hai, clinic mein kya prescribe hua hai, patient वापस ER में admit hua hai, वहाँ क्या दी जा रही है. So the reconciliation or tallying of the prescriptions or the therapy is really, really important. Next step is the patient education. So many of us don't provide patient education to a level which is really important. आपने एक बेहतरीन prescription write की है, medication आपने जो procure किया है, that is of highest quality, आपने अच्छे से store भी किया है. You have done an appropriateness review और उसकी जो आपकी interventions थी वो आपने doctor से discuss की. Everything went well. You have delivered to the patient. But patient used it wrongly because he or she was never told how to use it properly. So what's the point of having all those steps previously jo ke were in place, were as per the SOP, but the outcome actually of all those steps is zero because patient is not getting benefit. Instead, he or she has incurred harm just because of the fact that patient was not educated or instructed about the correct use of their medications. And then comes the adherence and continuation of care. Like a patient must have access to medications and all the barriers that may occur in taking their medications properly and continuously, those barriers have to be addressed. So pharmacists are in unique position to address all of these concerns, even when the medication is being dispensed to the patient. So now we can think, ab story khatam ho gayi hai, but my colleagues, the story still does not end. What about administration? We talk about prescriptions के वहाँ सबसे ज़्यादा errors report होते हैं literature में. So administration is the part which is the highest most error occurring in the medication use cycle. If a nurse, suppose, is not aware कि इसको कैसे dilute करना है, how to give it, किस route से देना है, क्या ये drug intradermally जा सकती है या intramuscularly जाएगी, इस drug की जो है वो safe and reuse कर सकते हैं, इस vial को हम दोबारा से अगली doses के लिए store कर सकते हैं,
इस सिरप को जो है आपने जो है वो किस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, इस सस्टेन रिलीज टैबलेट को आप जो है क्रश नहीं कर सकते, इसको आप एनजी फीडिंग से नहीं दे सकते. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन go wrong at the administration side. So pharmacists have a role to play at their end too, that this information gets along to the nurses side, and they are educated and trained on the correct use of the medications. So you can't say, and we can't say that this is the headache of the nursing or those who are administering the drugs. So it's not. Technically, pharmacists have to play their part so that any administration related errors can be omitted with the proper information provided about the medication. Okay, the story still does not end here. Then overall, pharmacists are, in charge, and they are, custodian of the prevention and wellness programs for the patients. Burden of disease is really important. You know, in Pakistan, the most burden of disease is related to the infectious diseases because of the, poor sanitary or hygiene conditions and the other issues, social issues that we have. We have high rates of TB, hepatitis, other communicable diseases. So, but over the last few years, we are also seeing an upsurge of non-communicable diseases as well. These are like diabetes, like cardiovascular diseases. So their incidence is also increasing. So for example, if there is a healthy person who has certain risk factors, and you are not, analyzing those risk factors and guiding the patient or person that how he can or she can prevent from converting those risk factors into an active disease, obviously, at some point in time, that person will develop that disease and definitely will be adding a burden on the overall healthcare system. So prevention is always better than cure. So you have to focus that areas where that can be dealt with vaccinations, with immunizations, with the screening, with the wellness education, and many other things. You can prevent a large number of population from turning into an active patient or carrying an active disease. So this is also a direct patient care activity that pharmacist has to perform. And on top of that, this is a unique service. The pharmacy is a unique profession that not only talks about the clinical care, the patient care, but is also the custodian of the finance, the top line, the revenue, sales, and the bottom line as well. So क्या formulary management करनी है, inventory कितनी robust होनी चाहिए, wastage कैसे prevent हो, economy of scale क्या होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो कि फार्मासिस्ट आर इन एक्सपर्ट पोजीशन फ्रॉम सिलेक्शन टिल द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन that they can effectively utilize the finances in order to make the process more efficient. And hence it comes to the entire medication management that pharmacists are have to play have a role to play in each and every step of the medication management cycle. So definitely it's not just a pharmacist, it's technically a unique skill set that we are talking about. And the message on this slide to you all is that if you are not utilizing your unique skill sets in all of those points that we have discussed today, it means that we are depriving our patients from the essential services and the essential skills that a pharmacist have that can save our patients from additional cost, additional healthcare burden, additional harm in terms of adverse drug reactions or ADEs, etc. So we have a role to play. So the question comes to our mind, ये सारी बातें सुनने के बाद कि करें क्या? How do we play our role? So to me, there are two things actually. One is that there are our core functions in which we can add our value, and these may be a slightly indirect method of patient care. But when you link everything with patient care activity, definitely the patient will be the sole beneficiary of the whole process. और ये कैसे होगा? We'll see in the next slides. And secondly, जो direct patient care activities हैं जो पूरी दुनिया में are known और जो है propagate की जाती हैं, so we have to adopt them, we have to sustain them within our healthcare facilities. तो ये दो काम करने से we will be more visible, we will be more accessible to both our healthcare teams and towards our patients. So coming to the first point, how we are going to add value. So add value का मतलब simply ये है कि linking it with the patient care. So linking what with the patient care? जो हमारे core functions हैं. Suppose selection and procurement है.
Now it's something जो कि बहुत ही मतलब non patient care approach के साथ भी किया जा सकता है. For example, आपने अगर जो है if you are selecting a drug solely because this is the cheapest one and this is something जो कि हमें bulk buying में हमें financially is more reasonable. So this is fair enough. But what about the rest of the features like safety and efficacy and rationale for use? So you have to link the selection and procurement process, keeping patients in mind. Suppose, for example, there are 5 beta blockers in your formulary. So 5 beta blockers, if you review it on financial basis, there may be a different result. And when you talk about the efficacy and safety principle, there may be a different result. So you have to strike a balance between these two entities, that which out of these 5 beta blockers are the most safest, most efficacious as per the literature, and are most economical. So maybe you come to the number of 2 or 3 beta blockers that would suffice and would cover the entire spectrum of indications. So definitely you will be procuring 3 instead of 5 beta blockers for your formulary. So definitely it has to be evidence-based rather than user prompted, that doctor demanded it, that's why we are keeping in the inventory, despite that it does not have any safety, efficacy, or economical benefits. So if you link it with the patient, that patient gets the most quality and good medication in terms of all these parameters, then obviously you are simply linking that core function and making it a more patient-oriented and patient-centered approach. और इसमें एक और एग्जाम्पल भी है कुछ लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स की, वो मैं आपको आगे स्लाइड में शेयर करती हूँ. Coming to the storage part of it. Now, storage is a very bread and butter of any pharmacy, because any product coming in the inventory has to be stored. But the point is how you link storage with the patient care. So patient care ke liye, the concept applied here is the storage for safety and security, the 3S concept. So 3S concept ke hisab se, you have to see the entire spectrum of your storage. It's not just the pharmacy storage. You have to see कि medications kahan stored हैं, either in your operating rooms, your emergency, your clinics, your wards, your ambulances, where the medications are stored. And are they safe? Safe means, for example, कोई accidents, errors, mix-ups, तो नहीं आप उससे expect कर रहे कि the way they are stored and the drugs which are stored, the type of drugs and the way they are stored can contribute to any kind of error. Because again, if the error happens or accident happens, the patient is the person who is getting the harm. So you have to be focusing on the harm in order to make your system safe. And then you have to think about the security of it, like how you are securing your products. Is the access authorized? या आपके वार्ड में जो है मेडिसिन रखी हैं, क्या कोई पोर्टर या असिस्टेंट भी उसको जो है वो एक्सेस कर सकता है, या आपका एक्सेस कंट्रोल्ड है कि सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज उसको एक्सेस कर सकते हैं? क्या वो पिलफ्रिज और वेस्टेज और जो डाइवर्जन्स हैं, स्पेशली डाइवर्जन्स ऑफ द कंट्रोल्ड मेडिकेशंस, कि उनका मिसयूज और अब्यूज पोटेंशियल ज्यादा है तो वो डाइवर्ट तो नहीं हो रही? You have to see all those things. So technically, when you review those storage sites with regards to safety and security, you will ensure कि कोई wastage और कोई accidents ना हो, और medications are actually available when they are needed. क्योंकि अगर ये processes ठीक नहीं होंगे, तो it means the medication when actually needed will not be available there, या वो medication नहीं available होगी जो कि actually needed थे. So jumbled up, messed up inventories, messed up formularies, messed up storage sites. अगर उसमें बहुत ज़्यादा duplications हुई नहीं है products की, उसके अंदर आपकी storage stacking अच्छी नहीं है, selection criteria अच्छा नहीं है, आप evidence based नहीं जाते हैं, that will definitely end up in some kind of error and harm to the patient. So you have to make sure that it starts with the procurement and purchase of the medication. This is the picture of Shifa Pharmacy, and you can see that the medications stored here are color coded. So they are stored for safety, the 3S concept. The 3S concept means here you can see that high alert medications are stored separately. The drugs with definite routes, for example, IM only drugs,
not for IV use, not for oral use. They are separately stored. Drugs with look-alike, sound-alike potential are separately stored. Then they are stored according to their the clinical classification, like GI drugs, like CNS drugs. So there are so many types of storage within the same pharmacy. You can see them as per the color codes. So this ensures that when you are picking the medication, the right medication is being picked and supplied to the patient, so that chances of errors and mishaps are reduced. So these are indirect ways of caring for a patient. This is a classic example that I would like to give that I discussed before at the time of purchasing. This is a temozolomide, and you can see that 20 and 100 mg capsules are both available as strengths. When we procured this medication, we found out that both the packs were totally look-alike. So there were high chances of errors between the two products, chances of mix-ups. So just imagine if a patient got 100 mg instead of 20 mg dose, so what would be the outcome of that error? So we requested the company that this is against the safety. So they have to change the product packaging in order to ensure that their product is available in our formulary. And the company responded to that, and they changed the formulation, slightly color differentiation. So the safety was incorporated at the time of purchasing of that product, even before the use on the patients. And this is just another example where the plain medication and the XR formulations were totally look-alike. So the company added certain differentiations on the products. So this is how you can actually embed different kinds of safety features when you are procuring for the patient. So evidence-based and identifying the errors potential proactively. So this is how you are linking your routine process into a patient care activity. So here comes the audience poll. Do you consider look-alike, sound-alike error potential of medicines when adding them in the inventory? जब आप अपनी inventory में medicine enter करते हैं, तो क्या आप उनका LASA potential review कर रहे होते हैं? Great. So 93%, that is almost 120 हमारे लोग जो हैं उन्होंने कहा कि yes, they do review, and 7% लोगों ने कहा कि we don't review, and many didn't answer. So yes, it's an area जो आपको मैं एग्जांपल यहाँ दे के समझाना चाह रही हूँ ये कि it's a routine process. Procurement purchase हर जगह होती है, but by keeping patients in mind, keeping patients' harm in mind, you can make that process more patient-centered by adding value to it. So this is just one example that how you can do that actually. So thank you for your feedback. So now next step is the prescription. So आपके ज़हन में सवाल आएगा कि why prescription? Pharmacist का काम तो नहीं है prescription लिखना. This is the doctor's domain, prescriber's domain, but there are certain value addition, just like I have told before कि आपकी value addition से वो process patient-centered हो सकता है, patient-friendly हो सकता है. So prescription में क्या किया जाए? We know that there are no standardizations, SOPs or policies for prescriptions in Pakistan. So each healthcare facility actually can do on their own कि हमारे prescription की standardization कैसे होगी. For example, this is a prescription. You can see that this is hardly legible. This is hardly containing the information that is needed to correctly dispense the prescription. So definitely this is not an ideal prescription, and it can result into an error or a confusion or definitely an accident. So prescription standardization आपकी healthcare facility में होनी ज़रूरी है. The prescription must contain patient-related essential information, medication-related essential information, dose, route, frequency, duration, instructions for use, etc. And prescriber-related information कि किसने prescribe किया ताकि उसकी identification हो, और अगर कोई issue है तो that person can be consulted back during appropriateness review. And then important information about the validity.
and you must have seen within your practice कि many patients come with their prescriptions after even 2 years. Same prescriptions पे आपको medication वो चाहिए होती है उनको. But there is no end to it. They don't want to go to doctors again. They don't want to have their reassessment done. So there has to be a validity on the prescription that after which it is mandatory for patients to consult their doctors and get a new prescription. So if you are not doing that within your healthcare facility, then this is a recipe for disaster and patient may incur any kind of harm. Second important thing is the prescription authority and privileges. Who is authorized? Many hospitals where nurses can write different chits and give it to patients and patients' attendants, and they can go into medical store and to buy the drugs. So nurses are not authorized to prescribe. So if this kind of a practice is happening, definitely the healthcare facility must have SOPs that who is authorized to prescribe. Secondly, the privileges. Many specialties have their privileges for certain kinds of high-risk drugs. For example, I'll just share this recent example that we have added ceftaroline in our Shifa formulary. And right at the time of addition, we identified that this drug is ID restricted drug. That is infectious disease. Doctors can only prescribe this drug. And we have not only listed that, but we have mentioned the criteria for use as approved by the Hospital Antibiotic Stewardship Committee that under these indications, this medication will be used. So by making a proactive approach, you can assign privileges that this drug can only be prescribed by X specialty and under these criteria for use जो कि हमने lay down यहाँ कर दिए हैं. So अगर आपके hospitals में high risk drugs जो कि high cost हैं या जो last resort हैं जैसे antibiotics broad spectrum होती हैं या high alert medications हैं, chemos हैं या बहुत सारी और चीजें अगर privileges define नहीं है तो it's high time that you start doing that. Next is the transcribing. सबसे पहले कि आपका physician order लिखता है and sometimes it happens कि somebody else copies that order and send it to pharmacy for dispensing. It could be a nurse, it could be a junior doctor, it could be a health officer, it could be any other person as per the type of specialty. So transcribing may have some inherent issues like errors and accidents के डॉक्टर ने कुछ लिखा था, ट्रांसक्राइबर ने कुछ और समझा और वो गलत इंटरप्रिटेशन के साथ प्रिस्क्रिप्शन आगे चली गई. So errors होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर. So first of all, you have to identify the need कि अगर ट्रांसक्राइबिंग अगर कहीं हो रही है, why do you need that transcribing? Why can't that direct order can't come to the pharmacy? Can you use carbon papers? Can you use electronic prescriptions? Can you use, I don't know, image sharing techniques? So that original prescription comes to the pharmacy. Instead, somebody transcribes it and adds error into that. And yes, if the needs are identified, then who is the right to transcribe? Can nurse transcribe? Can a technician transcribe? So you have to identify the authority that who can transcribe. And lastly, if the person is authorized to transcribe, under what SOPs that person is going to transcribe. So these policies will add, a value and reduce the harm and will improve the patient care definitely. And lastly, the prereqs, policies and restrictions, just like I've given you the example of this ceftaroline, that prereqs are already defined. So if the prescription comes in the pharmacy and pharmacist reviews and sees that this medication is prescribed for a gram-negative infection, for example, but the criteria says that it is the treatment for MRSA for XYZ condition, then why gram-negative? So pharmacist can intervene and talk to the doctor and stop that irrational use at that particular instance. So if that policy is not there, obviously pharmacist को बहुत hard time होगा doctor को intervene करने में और doctor की जो है acceptability भी probably interventions के ऊपर नहीं आ सकेगी. So pharmacist की intervention को backup करने के लिए, if you have policies and SOPs in place, that would help, rationalizing the use of drugs. These are some examples of prescribing privileges. For example, narcotics जो है सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पेन और पैलिएटिव केयर के डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, आईसीयू में जैसे यूज होती है या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एडजंक्ट यूज होती है, सो दे आर ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब. पैरालाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे एट्राक्यूरियम, सक्सेनाइल कोलिन, ओनली एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर आर ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब. कीमो है, हीमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड सेलेक्टेड स्पेशलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है यूरोलॉजी के अंदर जो है ब्लैडर इंस्टॉलेशन में जा रही है कोई ड्रग,
या आपकी गायनी में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मीथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, तो गायनी और यूरोलॉजी जो है वो एक्सेप्शंस हो सकती हैं कीमो प्रिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह से वाइगाबैट्रिन है, जिन ड्रग्स का बहुत ज्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पोटेंशियल होता है। आपको पता है कि विगाबैट्रिन कैन कॉज विजन लॉस अगर इसका पीरियोडिक विजन टेस्टिंग ना की जाए। तो विजन लॉस का मतलब ये है कि जाहिर है इट्स अ सिवियर कंडीशन, तो उस केस में किन को प्रिस्क्राइब होगी, कैसे प्रिस्क्राइब होगी, फॉलोअप कैसे होगा, तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ओनली न्यूरोलॉजी विल डू दैट एंड दिस इज द प्रोसीजर जिसके तहत वो करेंगे। एंड सेम गोज विद जो ड्रग्स जैसे मिथाइलफेनिडेट है जिसमें एब्यूज का पोटेंशियल है, या क्लोजपिन है जिसके एडवर्स रिएक्शंस हैं माइलोसप्रेशन के, तो उनको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ऐसी ड्रग्स को आपने सिर्फ साइकियाट्री यूनिट ही करेगा ताकि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ पेशेंट्स को कर सके। तो रिस्ट्रिक्शन से जो है फायदा ये होगा कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल नॉट बी प्रिस्क्राइबिंग इट, और उसको जो है स्टैंडर्ड एसओपी के तहत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप यूज कर सकेंगे। सो हियर कम्स द ऑडियंस पोल। इफ यू गेट सम काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जिस पे लिखा हुआ है एक्यूरॉन 1 इंजेक्शन, आप ऐसी प्रिस्क्रिप्शन को एंटरटेन करते हैं या करेंगे? वेल आई होप कि दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। 8% लोग कह रहे हैं कि हम दे देंगे, यस, और 80% लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे, और 12% लोग कह रहे हैं कि यस एट टाइम्स हम दे भी देंगे। सो द पॉइंट इज कि this is a high alert medication. Acuron is atracurium and it is a paralyzing agent. और अभी हमने पीछे बात की कि the prescribing privileges should be restricted to anesthetist only. So आपने अगर इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन अपने पास एंटरटेन करनी है तो you have to be very clear कि आपने इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस के लिए फिर तैयार रहें कि अगर इसके ऊपर कोई मिसयूज हुआ है, कोई एरर हुआ है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि सच काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस in which the prescriber, the patient information, the dose, the medication related information is not identifiable, तो आपका appropriateness review हो ही नहीं सकता इस prescription के ऊपर। So जब appropriateness review नहीं होता तो patient harm is definitely expected. So you have to be very much cognizant of the fact and make SOPs accordingly. Then comes the appropriateness review. Appropriateness review तो direct patient care activity है जिसमें at times आप patient से भी बात करते हैं, and then you have to contact the prescribers and the other healthcare providers in order to ensure the prescription is right and the correct medication is being dispensed. So you have to define that who will do the appropriateness review. In many hospitals, pharmacist is the sole authority कि वो prescriptions को review करेगा, but in certain cases you may authorize certain nurses as well to review the prescriptions before they are being administered. तो आपके हॉस्पिटल में कौन लोग हैं, दोनों हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जो है किस तरह से होगा और किस पॉइंट पे होगा? व्हेन मींस किस पॉइंट पे अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू होगा? तो मेनी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर दैट एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, नई मेडिकेशन जब स्टार्ट होगी तब या कोई नया ऑर्डर लिखा जाएगा तो अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू जो है लाजमी होगा। मैनी ऑर्डर्स जो कि कंटिन्यू होते हैं कि पेशेंट को बीटा ब्लॉकर मिल रही है 3 दिन से, आज डॉक्टर ने ऑर्डर रिव्यू कर दिया है मजीद 3 दिन के लिए, तो मे बी उस केस में जो है अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर हॉस्पिटल पॉलिसी। बट हर न्यू ऑर्डर के ऊपर कि अगर नई बीटा ब्लॉकर के साथ एक नया एस इनहिबिटर ऐड हो गया है तो नाउ दिस इज अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन एंड हैज टू बी अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू जो है वो बनता है। सेकेंडली कि पैरामीटर्स क्या होंगे अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के, तो इसके अंदर मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, दिस इज JCIA स्टैंडर्ड 5.1 MMU का है, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड रिव्यू का, जो कि वारंट करता है कि हर न्यू ऑर्डर के ऊपर अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू किया जाए। और ये A to G आप एलिमेंट्स अगर देखें तो दीज आर द पैरामीटर्स जो कि जॉइंट कमीशन रिकमेंड करता है। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ड्रग, डोज, फ्रीक्वेंसी एंड रूट, थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन, रियल और पोटेंशियल एलर्जीज और सेंसिटिविटीज, real or potential interactions,
वेरिएशन फ्रॉम द हॉस्पिटल क्राइटेरिया फॉर यूज, जैसे अभी मैंने आपको सेफ्टेरोलिन की एग्जांपल दी कि वो इंडिकेशन डिफाइंड है, अगर आप उससे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वेरी करेगा तो आपने अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू लाजमी करना है उस केस में और डॉक्टर से बात करनी है। एंड देन पेशेंट्स वेट और अदर फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेटिनिन है और रीनल एडजस्टमेंट करनी है तो आपने फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में उसकी लैब वैल्यूज चेक करनी है। एंड अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो अगर प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो ड्रग तो आपका अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के ऊपर करके आपने प्रिस्क्राइबर से डेफिनेटली बात करनी है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। तो आपके एसओपी, आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी में ये चीज होनी चाहिए कि व्हाट पैरामीटर्स यू विल बी डूइंग फॉर योर अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू। अब जब आपने पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी। जो भी बंदा जिसको आपने असाइन किया, आइदर इट्स अ नर्स और अ फार्मासिस्ट who is authorized for the appropriateness review of the prescriptions, उसको इस प्रोसेस से गुजरना, रिव्यू करना और अपनी recommendations निकालना आनी चाहिए. So this has to be coupled with training. Fourth point is the resources to perform AR. Suppose अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी मैंने क्रेटिन में फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्रेटिनिन देखा और वो 6 है और 6 का मतलब है कि बहुत ही रीनल क्लियरेंस लो है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लेस देन 10 ml क्लियरेंस के ऊपर जो है इस एक्स्ट्रा की क्या डोज बनती है? तो आई नीड टू चेक इट फ्रॉम अ रिसोर्स, कोई बुक, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स जहां से मुझे उसकी डोज मुझे देखनी पड़े तो मुझे पता चल जाए। सो आपके हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में, फर्स्ट करें आप कम्युनिटी फार्मेसी में खड़े हुए हैं, वहां पर आपके पास क्या रिसोर्स है जहां से आप ये चेक करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर आस्किंग योर पीपल टू डू द अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट इज द मैंडेटरी पेशेंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पीछे प्रिस्क्रिप्शन स्टैंडर्डाइज करने की बात कर रहे थे तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो कि यहाँ A to G में दिए गए हैं. Those should be part of the prescription so that when the reviewer is doing the review, उसको ये information मिल सके, उसको पेशेंट का एज पता चल रहा हो, उसको वेट पता चल रहा हो, उसको एलर्जीज नजर आ रही हो, उसको रेलेवेंट लैब्स का एक्सेस हो. तो पेशेंट इंफॉर्मेशन का एक्सेस और उसकी मौजूदगी अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के लिए हॉस्पिटल इंश्योर करेगा कि फिर प्रिस्क्राइबर जो है वो रिव्यूअर तक पहुंचा रहा हो या सिस्टम के थ्रू उस पर्सन तक जो है वो पहुंच रही हो. एंड फाइनली जब आप अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू कर लें तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट कि आई हैव डन दिस अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू और ये मेरे इसके कंसर्न्स या इंटरवेंशंस थे which are either accepted by the doctor, or if they are not accepted by the doctor, what was the reason for not acceptance? So this documentation is really necessary. This is just an information, जैसे शिफा में जो हमारा सॉफ्टवेयर है, it provides all the necessary information in one screen. Even previous medication transaction history as well. But areas जहाँ पर healthcare के अंदर जहाँ पर computer system मौजूद नहीं है, you have to see कि आपकी prescriptions जो है वो इस सारी information को एक जगह पर कोलेट करें और जो प्रिस्क्राइबर है वो इन पैरामीटर्स को फिल करे और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी तक पहुंचाई जाए, सो दैट आपकी अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के वक्त ये सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके पास वन गो में मौजूद हो या आपके पास इजी एक्सेस हो कि आप जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. These are some common, quick, authentic resources. I don't mean to promote any of them. This is just for your information. जिसमें से कुछ बिल्कुल free हैं और कुछ ऐसी हैं जो subscription based हैं, and you can consult them while doing the appropriateness review, और इनको आप easily जो है through internet जो access कर सकते हैं. Then hospitals must have, the healthcare facilities must have their own mechanism of sharing the information through their guidelines, through updates, safety alerts. The information regular basis के ऊपर you have to start doing that so that every time new information comes, new safety update comes, people are apprised and updated about it. Another important thing जो कि अक्सर I come across जब मैं pharmacist से बात करती हूँ कि why you don't do appropriateness reviews. Many of times they say कि हमारे पास तो इतना time ही नहीं होता. There is so much patient rush कि हमें उस वक्त calculation करना और सारा कुछ मुश्किल लगता है. So this is just one example to show you कि how you can do it actually in a couple of seconds. इस अगर आप इस table को देखें तो there are commonly used antibiotics, commonly used syrups जो कि pediatric patients में use होते हैं और उनके weights जो है corresponding weights के साथ उनकी doses यहाँ mention है
ऑल यू हैव टू डू इज कि जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आए तो आप ये देखें कि ओके अच्छा 15 kg का पेशेंट है और उसको सेफिक्सिन की डोज इतनी जा रही है, तो क्या वो विद इन रेंज फॉल करती है या नहीं करती. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स कि यू कैन कंक्लूड दैट दिस प्रिस्क्रिप्शन इज विद इन द लिमिट और विदाउट और एक्सीडिंग द नॉर्मल डोज, एंड यू कैन इंटरवीन अकॉर्डिंगली. And you can have references available at the bottom of it, ताकि when you call the doctor you can tell them कि I have seen it from the new facts, I've seen it from the up to date whatever reference you have collected, and according to that the dose is on a higher side, so please kindly correct that. तो आप ये information को within seconds कर सकते हैं. तो you have to develop these resources within your pharmacies, चाहे आप community में खड़े हैं चाहे आप hospital में खड़े हैं. And then there is specialized appropriateness review जो कि clinical pharmacist करते हैं, और ये वो selected areas हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी list हो सकती है, but you can consider some of them like infectious disease, antibiotic use, critical oncology, transplant, etc. जहाँ पर आप specialized clinical pharmacist को appoint कर सकते हैं so that close monitoring उन products की जा सके और doctors के साथ जो है prescriptions को optimize किया जा सके. So this is just a cool fact from Shifa. Every hour we review prescriptions और उसमें हम जो है at least 2 problems identify करते हैं that translates into 800 corrections per month and then 2500 interventions per quarter, और इसमें से 95% से ज़्यादा जो है वो accept हो जाती है. So this is how you play your role in ensuring that correct medication is supplied. So just imagine कि 2500 errors, if they are not intervened, they will be passed on to the patient, and patients will experience harm, they will be readmitted, they will be bounced back to hospital. So extra drugs देनी पड़ेंगी उसको cover करने के लिए. So many things coming out of those errors. So this intervention or appropriateness review is really, really important. So that was about the value addition. Now we come to the direct patient care activities, जो कि globally acknowledged हैं और इसको हमें अपने पास अपनी healthcare facilities में incorporate करना है. The first thing is the transition of care. Just like I've told you that when the patient is admitted, when the patient is shifted within the healthcare facility, for example, patient was admitted in ICU, now the patient is stable and moved to the routine general ward. So this is also a transition of care. And the patient, when the patient is discharged or when the patient is shifted out of the healthcare facility, चाहे वो घर में जा रहा हो, चाहे वो किसी nursing home में जा रहा हो, या वो किसी दूसरे hospital में shift हो रहा हो, ये वो areas हैं जिसमें there is a known concern that whenever this happens, there will be chances of omissions, duplications, errors, mishaps. Patients एक ही drug जो है 2 नामों से ले रहा था क्योंकि उसको यहाँ prescribe हो गई X brand से और घर पे वो Y brand ले रहा था, लेकिन technically both drugs were the same. So technically patient is ending up in having same drug in duplication, overdose, and patient experience serious side effects and coming back to ER emergency due to that ADR. So these kind of issues do happen. So first of all, you have to review what medications are being prescribed at every stage. You have to reconcile, that is, you have to make sure that the omissions and duplications are reviewed and corrected, and then accordingly you have to supply the medications. तो इसमें करते क्या है कि जैसे शिफा में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब पेशेंट एडमिट होता है तो हम पेशेंट को जो है रिकंसिलिएशन फॉर्म जो है डॉक्टर्स फिल करते हैं जो उसके घर पे मेडिकेशंस ली जा रही थी, और वो फॉर्म जो है, ये करंट फॉर्म जो है हमारा ऑनलाइन हो चुका है, बट जस्ट टू शो यू कि दिस वाज स्टार्टेड विद अ मैनुअल फॉर्म. तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज नो कंप्यूटर सिस्टम, यू कैन आल्सो स्टार्ट इट इन फॉर्म ऑफ अ मैनुअल फॉर्म कि डॉक्टर्स राइट द होम मेडिकेशंस एंड एडमिशन ऑर्डर्स की लिस्ट साथ में फार्मासिस्ट के पास आती है. फार्मासिस्ट उन दोनों को टैली करता है and sees कि there is no issues or omissions, और उसके बाद जो है अगर कोई इशू होता है तो डॉक्टर से डिस्कस करके उसको उसी वक्त रेक्टिफाई करा लिया जाता है विद इन 24 hours ऑफ पेशेंट्स एडमिशन. सेकेंडली, जब पेशेंट जो है वो मूव आउट होता है किसी वार्ड से टू डिफरेंट वार्ड, स्पेशली फ्रॉम आईसीयू और फ्रॉम और टू आईसीयू, उस वक्त फार्मासिस्ट जो है वो उनकी तमाम जो ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं उनको टैली करता है और उनको रिव्यू करता है. और फिर थर्ड स्टेज जो होती है वो डिस्चार्ज के वक्त होती है कि जिस वक्त पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उस वक्त उसकी डिस्चार्ज समरी और जो उसकी
इन पेशेंट की मेडिकेशंस थी और उसकी घर की मेडिकेशंस थी। इन 3 लिस्ट को जो है वो रिकंसाइल करते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड दे डिस्कस विद डॉक्टर्स एंड दे गेट things rectified before the patient leaves the hospital and goes home. So this is how different types of medication reconciliation at different steps are done. अब इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या हम हर पेशेंट की करें, हमारे पास तो इतने फार्मासिस्ट नहीं है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, तो यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज. नोबडी इज सेइंग दैट यू ईट द एलिफेंट इन वन बाइट. You have to prioritize your work. You have to focus on high risk. High risk means कि वो medications, वो patient जो high alert medications ले रहे हैं. Suppose patients on insulin, patients on anticoagulants, patients on antiarrhythmics, patients on drugs like digoxin, narrow therapeutic index drugs. ये सारी high alert medications हैं. फिर वो patient जो more than 5 medications ले रहे हैं. क्योंकि this is a known fact कि with polypharmacy, the chances of ADRs, ADEs is twice. So जितनी ज्यादा medications होंगी उतने ज्यादा ADEs होंगे. तो वो patients आप prioritize कर सकते हैं जिनकी 5 या 5 से ज्यादा medications हैं, और फिर वो patients prioritize कर सकते हैं जो vulnerable है. Vulnerable कौन से हैं? जो very old हैं, जो very young हैं, जैसे न्यूनेट्स हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, या वो पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस के हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं. तो ये वो पेशेंट्स हैं जो वनरेबल पेशेंट पॉपुलेशन है. तो आप टू बिगिन विद आप इनमें से किसी चंक को उठा के यू कैन स्टार्ट द ट्रांजिशन ऑफ केयर और रिव्यू बाय फार्मासिस्ट, और इसके अंदर डेफिनेटली यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स टू गेट देयर मोस्ट अप्रोप्रिएट होम मेडिकेशन हिस्ट्री, और उसको कंपेयर करना और सारा कुछ इंटरवीन करना. सो दैट विल बी अ डायरेक्ट पेशेंट केयर एक्टिविटी. देन कम्स द एजुकेशन एंड एडहेरेंस पार्ट ऑफ इट. इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रायोरिटाइज. अगेन वही बात है कि यू कैन नॉट काउंसल ईच एंड एवरी पेशेंट इन डिटेल. जाहिर है हर इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं दी जा सकती है, लेकिन किसको देनी है डिटेल में, जाहिर है जैसे हमने पीछे बात की कि देयर कुड बी हाई रिस्क ड्रग्स, देयर कुड बी पॉलीफार्मेसी प्रिस्क्रिप्शंस, देयर कुड बी वनरेबल पेशेंट पॉपुलेशंस. तो उनको आपने प्रायोरिटाइज करना है कि इनको तो जरूर हमने जो है डिस्कशन और रिव्यू के बगैर, एजुकेशन काउंसलिंग के बगैर फार्मेसी से नहीं जाने देना. बेसिक इंस्ट्रक्शंस किसको देनी है? जो पेशेंट्स जो है मे बी ऑन गोइंग मेडिकेशंस पे हों, कि वो छठी दफ़ा आपसे डायबिटिक मेडिकेशंस की रिफिल लेके जा रहा है, ही और शी ऑलरेडी नोज दैट दिस मेडिकेशन इज़ फॉर डायबिटीज़, और आप उसको इससे पहले भी काउंसिल कर चुके हैं. तो आपको हर दफ़ा डिटेल्ड काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीइंफोर्समेंट करने की ज़रूरत है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने की ज़रूरत है. कोई रेड फ्लैग्स है या कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसको आपने उनसे फॉलो अप करना है, जैसे सपोज वॉरफरिन है, तो वॉरफरिन के साथ आप पेशेंट को हर दफा ये पूछ सकते हैं कि एनी ब्लीडिंग एपिसोड्स, कोई ब्रूजिंग तो नहीं हुई आपको, कोई आपको विजन के इश्यूज तो नहीं आए हैं. दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू मे आस्क, और उसमें डिटेल काउंसलिंग की हर दफा यू डोंट नीड दैट. दूसरी चीज ये है कि टूल्स क्या यूज होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज इन योर हेल्थ केयर फैसिलिटी देयर आर 10 फार्मासिस्ट हु आर वर्किंग, एंड 10 फार्मासिस्ट जब वॉरफरिन की काउंसलिंग करेंगे तो दे मे बी काउंसलिंग इन अ डिफरेंट मेथड. और हो सकता है अगर 4 बातों में से एक फार्मासिस्ट 3 बता रहा हो और दूसरा फार्मासिस्ट सिर्फ 2 बता रहा हो, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी एजुकेशन में. तो उसके लिए जरूरी है कि यू कैन हैव स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स. जैसे मैं आपको ये एग्जांपल शो कर रही हूँ कि वी हैव दी स्टैंडर्ड ब्रोशर्स, और हर फार्मासिस्ट जो है वो उसी को कंसल्ट करके पेशेंट को एजुकेट करेगा ताकि एसेंशियल्स जो हैं वो जरूर कवर हो जाएं, एंड देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसके अंदर आपने ये 4-5 पॉइंट्स every pharmacist have to cover, and this saves time as well. दूसरी बात यह है कि यू हैव टू सस्टेन इट, बी कंसिस्टेंट. ये नहीं हो सकता कि यू आर गेटिंग 50 पेशेंट्स ऑफ वॉरफरिन एवरी मंथ एंड आप उसमें से सिर्फ 10 को काउंसिल करते हैं. सो इफ 50 में से आपकी जो है फॉलो अप पेशेंट्स निकाल के बाकी जो पेशेंट्स हैं अगर आप उनको कंसिस्टेंटली एजुकेट नहीं कर रहे हैं, तो अगेन यू आर नॉट गिविंग अ यूनिफॉर्म केयर टू द पेशेंट, एंड पेशेंट हार्म विल इनकर फॉर दोज जिनको आपने प्रॉपर्ली काउंसिल नहीं किया है. So ये जो tools होते हैं they help you in saving time and ensuring uniformity of education when you are dealing with the patients. This is another thing that we have done in Shifa. Just I'm sharing you as an example. This is a methotrexate dispensing checklist. So whenever oral methotrexate is dispensed on the outpatient setting, the pharmacist have to fill this 7 steps, जिसके अंदर इसके patient parameters review, appropriateness review standardized तरीके से किया जा रहा है.
और पेशेंट की काउंसलिंग स्टैंडर्डाइज तरीके से की जा रही है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू में जो मैंडेटरी रिव्यू इंफॉर्मेशन है वो आप मिस नहीं कर पाएंगे। और हर फार्मासिस्ट, अगर वो बिल्कुल फ्रेशर भी है, अभी जस्ट यूनिवर्सिटी से पास ऑन करके अभी वो ताज़ा फार्मासिस्ट अपॉइंट हुआ है, तो उसकी नॉलेज और डेफिनेटली जो 10 साल से जो है ओपीडी फार्मेसी में काम कर रहा है उसकी नॉलेज में बहरहाल फ़र्क होगा। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन और उस कॉम्पिटेंसी के गैप को आपको कवर करने के लिए दीज काइंड ऑफ चेकलिस्ट हेल्प यू, एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल. Another important thing that I would like to tell you is the patient education, जो कि high alert medication guidelines पाकिस्तान की develop हो चुकी हैं. You should all know that. Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) की website पे ये guidelines for high alert medications available हैं और ये इनेक्ट हो चुकी हैं अक्टूबर 2022 से. अगर आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो इसमें जर्नल इंट्रोडक्शन के बाद जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन यूज है और उसके बाद हाई अलर्ट मेडिकेशंस की मास्टर लिस्ट दी गई है, द मेडिकेशंस, हाई अलर्ट मेडिकेशंस दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान. सो बाय कंसल्टिंग दिस मास्टर लिस्ट you can see what high alert medications are available in your organization. So you can prioritize them for the education, for the reconciliation, for the transition of care, for the appropriateness review, so many things. So this high alert medication list helps you. दूसरी इंफॉर्मेशन ये है इस गाइडलाइन के अंदर कि there are details given about each and every drug. I'll just show you one example of antithrombotic or anticoagulants. If you see this section, you will see first of all that why these drugs are high alert, what are the risks associated with high alerts, and literature में what kinds of accidents, ADEs are reported due to these drugs, so that आपको exactly पता हो कि मुझे कहाँ focus करना है. और फिर उसके बाद नीचे आपको देख रहे हैं कि वो मेडिकेशन जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनको भी लिस्ट डाउन कर दिया गया है. उसके बाद स्पेसिफिक टू दिस क्लास कि इन हाई अलर्ट एंटीकोगुलेंट्स को स्टोर कैसे करना है, डिस्पेंस कैसे करना है, प्रिस्क्राइब कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कंप्लीट डिटेल दी गई है. सो वो जो फर्स्ट पॉइंट था कि लिंकिंग इट विद पेशेंट केयर, वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, तो इसमें आप हर पॉइंट के ऊपर पेशेंट वैल्यू एडिशन फोकस पॉइंट्स देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. एंड फाइनली जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पेशेंट एजुकेशन का. तो आप यहाँ से इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि इफ यू आर काउंसलिंग अबाउट हाई अलर्ट मेडिकेशंस इन योर हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो आपने किन पॉइंट्स पे फोकस करना है और इसी के अराउंड आप अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं और एजुकेशन ब्रोशर्स बना सकते हैं. एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, द प्रिवेंशन एंड वेलनेस. इसमें इन पेशेंट्स के अंदर भी हम कुछ एक्टिविटीज रन कर सकते हैं. जैसे जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है इन द एडमिशन, इन पेशेंट एडमिशन, तो इट्स गुड चांस टू अपडेट देयर नेसेसरी इम्यूनाइजेशन. बहुत ही मतलब वनरेबल पेशेंट है तो उसकी निमोकोकल वैक्सीन हो सकती है, उसकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हो सकती है. पीडियाट्रिक्स अगर हैं तो अगर उनका कोई मिस डोजेज हैं तो कैचअप इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के तहत यू कैन अपडेट देयर इम्यूनाइजेशन. सेकेंडली, इन पेशेंट्स को आप फोकस्ड काउंसलिंग कर सकते हैं ऑन हाई रिस्क कंडीशंस, जैसे स्मोकिंग है, कार्डियोवेस्कुलर यूनिट है, कार्डिक आईसीयू है. ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनके साथ ये कंडीशंस हैं तो उनके अंदर आप जो है असेसमेंट करके उनके रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग है, वेट है, प्री डिस्पोजिशन टू डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन पेशेंट्स को आप हाईलाइट करके इनकी डिटेल्ड काउंसलिंग कर सकते हैं. काउंसलिंग ऑन द इस वेलनेस के लिए भी और काउंसलिंग ऑन द एडहेरेंस ऑफ द ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग भी के जी आप ड्रग्स को जो है वो रेगुलरली यूज करें. और गोल क्या है कि रिड्यूस ड्रग रिलेटेड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, बिकॉज यू डोंट वांट योर कार्डियक पेशेंट्स टेकिंग डिजॉक्सिन कि वो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साथ दोबारा ईआर में मौजूद हो एक हफ्ते बाद. यू डोंट वांट दैट. सो अगर आपके पास ड्यूरिंग एडमिशन अगर उसका लेंथ ऑफ स्टे एटलीस्ट 2 दिन का है तो यू हैव 2 days to actually spare some time and go to that person and explain him about the digoxin, so that when he or she is discharged at home, he uses that narrow therapeutic index drugs carefully. So this is how you can direct your wellness and prevention programs. And then discharge medications और उसके बाद prescription की refill, ताकि patients को उसकी monitor उसकी compliance के ऊपर आप जो है वो गाइड कर सकें और refill के options दे सकें ताकि patients जो है वो uninterruptedly अपनी medications को use कर सके. इसी तरह से आउट पेशेंट के ऊपर आपका जब पेशेंट से इंटरेक्शन होता है तो यू कैन एडवाइज ऑन यूज ऑफ हेल्थ एंड ओटीसी आइटम्स,
जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन है, फ़र्ज़ करें ये डिजॉक्सिन की, आई हैव गिवन एग्जांपल, आपके पास पेशेंट आया है और उसने आपसे डिजॉक्सिन भी फिल कराई है अपने पास, और उसने कहा कि मुझे कोई वॉमिटिंग की मेडिसिन भी दे दें, मुझे 3 दिन से बहुत शदीद वॉमिटिंग्स और नौजिया हो रहा है। नाउ आपके कान खड़े होने चाहिए एंड यू शुड आस्क कि क्या एग्जैक्टली इशू है और डिजॉक्सिन की आपने लास्ट सीरम लेवल कब करवाया था, बिकॉज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ GI सॉरी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज द GI अपसेट। तो अगर उसको GI अपसेट हो रहा है तो आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें फौरी तौर पे, या आप अपना डिज लेवल करवाएं और उसके बाद मुझे बताएं अगर इससे ज्यादा है तो यू हैव टू फौरी तौर पे होल्ड द ड्रग एंड यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो ये प्रॉम्प्टर्स हैं इस किस्म की मेडिकेशंस, जैसे कोई एंटीबायोटिक ले रहा है और उसके साथ डायरिया हो गया है, सी डिफ हो गया है, या कोई उसको कोलाइटिस हो गया है, तो दीज आर इंडिकेशंस जो कि उस ड्रग रिलेटेड साइड इफेक्ट्स को आप जो है बेहतर तरीके से केटर कर सकते हैं। यू कैन सजेस्ट अफोर्डेबल ऑल्टरनेट्स, पेशेंट अपनी रिफिल्स अगर नहीं ले रहा और वो इंटरप्टेड थेरेपी कर रहा है या ऑल्टरनेट्स दे रहे हैं शॉर्ट ड्रग्स के, जो कि इस वक्त करंटली एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में इस वक्त राइट नाउ, तो आपने ऑल्टरनेट्स क्या बताने हैं ताकि पेशेंट सिर्फ इस वजह से दवा लेना ना छोड़ दे कि उसको कहीं से मिल नहीं रही है। उसके बाद हेल्थ स्क्रीनिंग्स की हमने बात की है, जिसमें आप उनको फ्री हैं, आप शुगर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कि आराम से जो है फार्मेसीज पे रखी जा सकती हैं और आप इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग्स करवा सकते हैं। और फिर डेफिनेटली द काउंसलिंग, एडहेरेंस, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल्स आपने आउट पेशेंट पे तो करनी ही है, और वैक्सीनेशंस भी बहुत सारी कम्युनिटी फार्मेसीज ऑफर कर रही होती हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा सीजन अभी गुजरा है, तो इन्फ्लुएंजा सीजन के अंदर फ्लू वैक्सीनेशन जो है वो आपको जो है वो आप बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं। सो इन अ नटशेल, फार्मासिस्ट इज अ यूनिक स्किल सेट, और अगर आप इस स्किल सेट को बिल्कुल आप रूडिमेंट्री और बेसिक्स के ऊपर यूज कर रहे हैं तो टेक्निकली यू आर डिप्राइविंग योर पेशेंट्स फ्रॉम द अल्टीमेट अटमोस्ट बेनिफिट्स जो कि ये प्रोफेशन ऑफर करता है। एंड वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू डिप्राइव आवर पेशेंट्स, वी वांट दैट आवर पेशेंट्स शुड बी हेल्दी, we want to see a dream of healthy Pakistan. So pharmacist is a high time that if you don't fill your place, patient care will definitely be compromised. So thank you very much. And for any future, C sessions, you can always connect with us so that you are timely updated about it. Thank you very much. If there are any questions.